Not trying to be easy, not trying to be cool. Hello students, this is the lecture for 4th class and this is the maths book for 4th class. I hope this is clear to you. Comprehensive maths number 4. Today we are going to start chapter number 12. So this is chapter number 12, that is perimeter. So can you open your book, your maths book, and chapter number 12, that is perimeter. So 4th class, we are going to start perimeter. Alright. This perimeter दो शब्दों से मिलके बना है. One is peri, another is meter. So peri एक word है, meter is the another word. So peri means, 4th class, peri means boundary. Peri means boundary. Boundary क्या होती है? जो चार दीवारी होती है. External, सबसे बाहर वाली जो दीवारें होती हैं, that is called boundary. So peri means periphery, that means boundary. Alright? And meter means measurement or measurement. So perimeter means boundary की measurement. So measurement of the boundary is called perimeter. Alright? Now, let us suppose there is a diagram. Say this one. So what's its name? I know you know. It's triangle. This is triangle. Say this is triangle A, B and C. So can you please tell me what's the boundary of this triangle? The boundary of this triangle is this side AB, this side BC and this side AC. So this is the boundary of the triangle. So perimeter of triangle, this triangle would be AB plus BC plus CA. So perimeter would be AB plus BC plus CA. So this would be the perimeter of triangle ABC. Alright? Another example. Suppose this is another diagram. Say P, Q, R and S. So this is another diagram P, Q, R, S. Again, मुझे बताओ इसकी boundary is what? इसकी boundary क्या है? So this is the boundary. This side, this side, this side and this side. So this is the boundary of this diagram P, Q, R, S. Alright? So अगर आपने इसका perimeter find करना है, what you have to do? आप इसकी boundary को plus कर दो. For example, PQ. This is PQ plus QR. This is QR plus RS. This is RS. And the last one is, yes, last one is SP. So plus SP. So this is the perimeter of this particular diagram. Alright. So perimeter, boundary की measurement. Alright. If I'm talking about this blackboard, this is the one side of the blackboard. This is the another side of the blackboard. This is the third side of the blackboard and this is the fourth side of the blackboard. So this is the boundary of the blackboard and this is the perimeter of the blackboard. अगर आप अपने बेड पे बैठे हो तो जहां पे आपका बेड खत्म हो रहा है, that is the boundary of the bed. अगर आप स्टडी टेबल पे पढ़ रहे हो, then स्टडी टेबल जहां पे आपका फिनिश हो रहा है, that is also have boundary. आपकी कॉपी की भी बाउंड्री है जिस कॉपी पे आप लिख रहे हो, बुक की भी बाउंड्री है. नाउ इफ आई एम टॉक अबाउट दिस बुक, अगर मैं इस बुक की बात करूं, दिस इज द बाउंड्री ऑफ द बुक. ओके, मैं छोटी बुक भी लेके आ सकता हूं. दिस इज द स्मॉल बुक. अब इसकी भी तो बाउंड्री होती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो.
दिस बाउंड्री इज द पेरीमीटर। अगर मैं किसी हैंकी की या किसी और चीज की बात करूं, सपोज दिस इज कोई भी एक मेरे पास पीस ऑफ पेपर है, दिस इज आल्सो हैव बाउंड्री। तो जिसकी भी बाउंड्री है दैट इज द सम ऑफ द बाउंड्रीज इज पेरीमीटर। तो आप बाउंड्रीज को जोड़ते जाओ, आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। ऑलराइट, वी विल डू सम एग्जांपल। लेट मी रब दिस वन। So I'm going to pause the video for a second. So let me pause this video first. So student, let us do some examples in order to find perimeter. Okay? Now this is one diagram. All right? अब इसकी boundary है, this is the first boundary. Okay? तो value of first boundary is 1. मैं यूनिट नहीं लिख रहा, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, अभी मैं उसमें नहीं जा रहा। माय बेसिक फोकस कि आपको एक बार पहले पता चल जाए हाउ टू फाइंड पेरीमीटर। ऑलराइट, सो इसका अगर पेरीमीटर फाइंड करना, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डायग्राम, अगर आपने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है तो आपने इन बाउंड्रीज को प्लस करना है। राइट, सो 1 प्लस 2, सो 1 प्लस 2। राइट, अब तीसरी जो साइड है दैट इज 3, सो दिस इज 3। और जो फोर्थ साइड है दैट इज अगेन 2, सो प्लस 2। नाउ यू कैन ऐड वेरी इजीली। 1 प्लस 2 इज 3, 3 प्लस 3 इज 6, 6 प्लस 2 इज 8। तो पेरीमीटर ऑफ दिस डायग्राम इज 8। डोंट वरी अबाउट द यूनिट्स, इट विल बी 8। ओके, नाउ दिस इज होमवर्क फॉर यू। Please find the perimeter of this diagram and this diagram. Okay? You may take the help of your mother, father, elder brother, older brother, sister, anyone. Alright? If you have any doubt, let me know. Okay? So this is the basics of perimeter. So see you in the next video, and please let me know if you have any queries about this chapter. Okay, so see you again. Bye.